स्वागत है। प्रणाम भैया। जय माता दी भाई। भोजन हुआ कि नहीं भाई? हाँ हाँ भाई, कर रही हैं लाइव। भैया भोजन हो गया आपका?
हाँ भैया, अभी सोच रहे हैं थोड़ा मोबाइल चार्ज हो जाए, उसके बाद पूजा के लगे ले जाकर रख दूँ। 1 घंटा पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई। रीता बहन, राधे राधे। कैसी हो रीता बहन? लाइक करते रहिए। भैया आप बताए नहीं हो, मतलब भोजन हो गया आपका?
दिनेश भाई, हमारे लाइव में आपका स्वागत है। राधे राधे। कैसे हो भाई? सीताराम। दीपा दीदी, राधे राधे। लाइक कर दो दीपा दीदी। दीपा दीदी लाइक कर दो, दिनेश भैया लाइक कर दो। भाभी जी, बस झुकी राम राम। पैर छूके। अच्छा भाई, खुश रहो। तेजी से दौड़ते हुए आपकी लाइव में आया हूँ। अच्छा, कहाँ पर थे भाई? दौड़ते हुए आ रहे हो? हर हर महादेव। दीपा दीदी, दीपा बहनी प्रणाम। आप कैसी हो? भैया बोल रहे हैं दीपा दीदी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वही तो। दिनेश भैया दौड़ते हुए आ रहे हैं। कहाँ थे कि दौड़ते हुए आ रहे हैं? बहनी लाइक कर दो। दिनेश भाई, अभी लाइक नहीं किए हो आप? पहले लाइक करो भाई। खुश रहो भाई। दिनेश भाई लाइक कर दो। सब लोग को राम राम दिल से। अच्छा, बताए नहीं हो दिनेश भाई, कहाँ थे कि दौड़ते हुए आ रहे हो? अच्छा अच्छा। कहाँ? वहीं थे हाँ? जब लाइव चालू हुआ दौड़ते हुए आए। आज 2-3 दिन से आप नहीं आ रहे थे, हम सोचे कहाँ चले गए हैं। अच्छा अच्छा। लाइक करने के लिए धन्यवाद भाई। अभी लाइक मिल रहा है दिनेश भाई को। अभी मिला लाइक। दीपा दीदी, राधे राधे। दीपा दीदी ऑन करके ना सो जाओ, ठीक है? जब नींद खुलेगा तो कमेंट करना, नहीं तो ऐसे ऑन रहने देना। भाई भोजन हो गया? भैया भोजन हो गया? दीपा दीदी पूछ रही हैं। दिनेश भाई, आपका भोजन हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा। राधे राधे सभी को। दिल के हर चूसती है, होते हैं गौरी सभी बहन समोसा खाती हैं, बदनाम होती है मैंने। सही बोल रहे हो भाई। सही बोल रहे हो। सब लोग हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, सब लोग को बहुत धन्यवाद। अच्छा भाई। और दिनेश भाई, आपके मैडम जी कैसे हैं? हम तो अभी नहीं जान, लेकिन पूछ ले रहे हैं। हमारी बुआ जी गांव आ गई हैं दिनेश भैया। अगर थोड़ी मोटी लड़की नहीं बहुत। दिनेश भैया भान पंडित जी भान ऐसा लाइक नहीं करते।
की लाइफ में गया था वो तो गए थे। अच्छा अच्छा। हनपतगंज कहाँ पर है भाई? हमको तो ये भी मालूम नहीं है कि हनपतगंज कहाँ है। क्या भाई? जी, अच्छा अच्छा। बच्चे लोग मम्मी से मिल गए। अच्छा भाई, आप नहीं गए थे? मैं भी गया था, कुछ बोला नहीं बोला। काहे? काहे नहीं बोले थे भाई? अपने मैडम जी से गुस्सा हो क्या? जीरो वॉचिंग दिख रहा है, पता नहीं। भाभी जी नींद आ रही है? नहीं भैया, नींद नहीं आ रही है अभी। अभी मोबाइल चार्ज में लगाई हूँ ना। मोबाइल चार्ज हो जाएगा थोड़ा, उसके बाद ले चल के वहाँ पूजा के लगे रखेंगे, तब कहीं सोएंगे भाई। हम्म। और बताओ दिनेश भैया। यहीं पर है भाई, यहीं पर है भैया। वो भी यहीं पर है। हम बोल रहे हैं, हम तो वो सो रहे हैं उतना, मतलब ज्यादा सो ही नहीं रहे हैं, जग रहे हैं थोड़ा थोड़ा। बोल रहे हैं तुम हैरान हो जाओ लाइव के पीछे। हम तो सोएंगे भाई, के सो तो ये काम हमारा है तो हमको हैरान होना पड़ेगा।
अजीत भाई सो गए का? नहीं नहीं, भैया सोए नहीं हैं, हो सकता है खाना वाना भोजन वोजन कर रहे हैं दीपा दीदी। हो सकता है अभी भोजन कर रहे होंगे भाई। राधे राधे। राधे राधे सभी को। अच्छा ठीक है भैया सो रहे हैं तो भैया तब तक। हाँ हाँ भाई, हमारे सर में खुद दर्द हो रहा है, हम तेल लगा रहे हैं, तेल लगाए हैं मुंह सिर में। तेल नहीं लगाते हैं सर में, हमको अच्छा नहीं लगता है। जब ज्यादा सर दर्द करेगा तभी तेल लगाएंगे भाई। हम सब जानते हैं, हाँ हाँ, काहे नहीं जानोगे। जानना चाहिए भाई। राधे राधे सभी को भाई। एक बात कहूँ भाई, आप नाराज तो नहीं होंगे दिनेश भाई? भाई से पूछे, पूछो दीपा दीदी, बोलो क्या बोलना है। राधे राधे सभी को। हम कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं, हंसता मुस्कुराता रहता हूँ बस, यही हमारी खुशी है। हाँ भाई, नाराज भी नहीं होना चाहिए, हम खुश, हमारे सब खुश, हम खुश हमारे सब खुश। आपके कष्ट के लोग, हाँ, लोग जो चार लोगों को तो अंदाज चुके हैं, इसलिए अगर, हाँ लेकिन हमारे दिनेश भाई कुछ अलग है दीपा दीदी। वो पंकज भाई जो थे ना, वो थोड़ा घमंडी टाइप है। हम्म। हमारे दिनेश भाई हसमोल हैं दीपा दीदी। वो कभी नहीं बोले हैं कि हम
वो तो पंकज भाई ऐसे बात बोलते हैं जैसे लगता है कि अभी सबको उड़ा देंगे। इसीलिए अब उनका कमेंट कहाँ पढ़ती हूँ ज्यादा। हाँ वही वही पंकज यादव, हाँ। वो तो घमंड वाला भाषा बोलते हैं। अब उनका कमेंट इसीलिए नहीं पढ़ती हूँ। आज आए थे लाइव में, फिर हम बोल बना किए, उनका कमेंट ही नहीं पढ़ रहे थे। दिनेश भाई चले गए, हो गया। अरे भाई ज्यादा बोले तो। नहीं नहीं, वो जो जिसका बात कर रही हो दूसरा है कोई है। दिनेश भाई तो हमेशा हंसाते हैं सबको। अभी भी हम इस बात पर शुरू करने का। हाँ भाई, लेकिन वो जो पंकज यादव एक थे ना, वो बोल रहे थे हम यादव हैं, हम सबको ऐसे कर देंगे, वो ऐसे ऐसे बोलते थे कि जैसे लगता था कि। हाँ वही तो भाई, नहीं। एक ऐसे पंकज भाई थे, वो बोल रहे हैं हम यादव हैं। हाँ, ऐसे बोल रहे थे कमेंट में कि हम के आप तो झगड़ा कर रहे हो। ठीक है नहीं नहीं, दिनेश भाई को बुरा नहीं लगेगा। दिनेश भाई ऐसे ऐसे नहीं है, वो हमेशा हंसते रहते हैं। कोई बात नहीं, हाँ भैया। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं भाई। सबका अपना अपना सोच होता है। हम सोचते हैं हम अपने प्रदीप भैया को क्या बुलाऊं, नंदोई बुलाऊं। ये भाई, जो मन में आए वही बुलाओ, दोनों पद आपका सही है। जब आपके घर जाएंगे तो वहाँ नंदोई के पद रखना। अभी तो भाई हैं। राधे राधे दिनेश भाई। जानती हो दीपा दीदी, पंडित जी बोल रहे हैं अपना हैरान हो रही हो, दीपा दीदी को भी परेशान कर रही हो। हाँ, तुमको तो नींद लगेगा नहीं, साथ में दीपा दीदी को भी नहीं सोने दोगी। हाँ। और बताओ भाभी जी, आज क्या बनाई थी? आज बनाए थे कोहरा की सब्जी, चावल रोटी भैया। जी भैया। खुद राजा होता है। हाँ सही बोल रहे हैं भाई।
काहे काहे दिनेश भाई? तो अपने भाभी का सपोर्ट करो, हाँ। कभी कभी ऐसा होता है भाई, नींद नहीं लगता है। हमको तो नींद आ रहा है, लेकिन बस मोबाइल चार्ज में लगाई हूँ ना, इसी कारण जो है अभी थोड़ा देर हमको जागना पड़ेगा। मोबाइल जब चार्ज हो जाएगा तो ले चल के वहाँ रखेंगे। हाँ भैया, अपने भाभी के सपोर्ट जल्दी कर दोगे हमारे भाई, तब हम भी जो है आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं तो यहीं पर अटका रह जाए। आप सब भाई के सपोर्ट से ही तो आगे बढ़ेंगे हमारे भाई। सोच रहे हैं भाभी कब सो जाती है, क्यों जग रही है। यही मोबाइल चार्ज नहीं है भैया, यही मोबाइल चार्ज के लिए। हाँ, सोच रही हूँ ना इसे, मतलब जैसे म्यूट किया हूँ, फेस नहीं है ना, तो वहाँ पूजा वाले घर में रख दूंगी ना, तब ठीक रहेगा, इसीलिए। और तो चार बात सुनाए हैं आपके भैया जी ने हमको, हाँ। बोल रहे हैं कि बोलती हो सर में दर्द है, जब सोओगी नहीं तो सर में दर्द तो होगा ही। ठीक, किए हैं। गड़बड़ नहीं किए, अच्छा, ठीक किए हैं, गड़बड़ नहीं किए हैं। हाँ, ओ आपके तरह ना फ्री दिमाग वाले हैं भाई। प्रेमनाथ भैया, हमारे लाइव में आपका स्वागत है। राम राम भाभी जी, राम राम भैया। सीताराम हमारे भाई। भाई तो भाई होते हैं, हाँ हाँ भाई, आप तो अपने भैया की तरफ रहोगे, लाइक करने के लिए धन्यवाद प्रेमनाथ भैया। अपने भैया की तरफ रहोगे ही भाई, रहो, कोई बात नहीं। और बताओ प्रेमनाथ भैया। प्रेमनाथ भैया, हम आपके लाइव में नहीं आ पाए आज, आज आएंगे सुबह में, याद से। थोड़ा बहुत होता रहता है, ज्यादा। हाँ हाँ भाई। हाँ, जब अपना काम भैया, अब जब हमको लाइव चलाना है तो डांट भी सुन लेते हैं भाई। अभी नहीं सुनेंगे तो लाइव भी नहीं चलाने देंगे, बोलेंगे रात में लाइव चलाओगी सारी रात जागोगी। भाभी जी, आया हूँ तो आपका लाइव चालू देखा तो। अच्छा, इतना टाइम मार्केट गए थे भैया? हम बोलते, अच्छा आपसे बात नहीं हो रहा। हाँ भैया, सही बोल रहे हो। नहीं, हम जब आज जब जैसे मोबाइल जब उठाए ना, जब हमको याद आया, तो 7 बजने में 2-3 मिनट बाकी था, हाँ। तो हम सोचे कि आप जाएंगे प्रेमनाथ भैया की लाइव में, हो सकता है उनको लाइव बंद करना है, हाँ। आप तो 7 बजे लाइव बंद भी कर देते हो ना भैया, इसीलिए हम फिर नहीं आए। भैया हैं तीन, तभी तो भाभी हैं दोनों, बस खुश रहो। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो भाई। कि भाभी जी ओके, कोई बात नहीं, नहीं भैया, हम इसीलिए नहीं आए कि भैया को ड्यूटी जाना होगा, हो सकता है
अब लाइव बंद कर दें तो इसीलिए फिर नहीं आए। अगर 15-20 मिनट का टाइम होता तो हम आते। 7 बजे वैसे लाइव बंद करती हो आप ना भैया। आज आएंगे 6 बजे। अपनी प्रेमनाथ भैया का 1 घंटा सपोर्ट करेंगे। भैया को भी भैया को भी मना लिया करो दोनों लोग कर चलाओ क्या मुश्किल। अरे भैया बोल रहे हैं हम लाइव में नहीं आएंगे। हाँ, जब तक चैनल आपका आगे नहीं बढ़ेगा। ये वो ये सब कुछ समझते नहीं है भाई। हम्म बोल रहे हैं जब आपका मन है जैसे कि टाइम भले पास कर रही हो और उतना नहीं समझते हैं कुछ ज्यादा। वो अपने काम में लगे रहते हैं। दिनेश भाई हंसते ज्यादा हैं। कोई बात नहीं भाभी। नहीं भैया हम आएंगे भाई। सुबह में सुबह में सोचती हूँ किसका लाइव चल रहा है किसने याद भी भूल जाती हूँ। ध्यान नहीं रहता है ना। और जो ध्यान होता है तो आपका ड्यूटी के समय हो जाता है। हमारे भैया भी रहते हैं हाँ हाँ आपके तरह दिनेश भैया। आपके तरह वो भी दूसरे अंदाज में रहते हैं। तो कैसे होती है जी वहाँ। प्रणाम है बड़े भैया। प्रणाम हो गया। हाँ भैया भोजन हो गया। बड़े भैया प्रणाम कैसे हो। हे भगवान। सीताराम भैया हे भगवान कैसे क्या हुआ प्रेमनाथ भैया लाइक छोटी बहन। अच्छा बड़े भैया लाइक करने के लिए धन्यवाद। हम आपके लाइव में अपना मोबाइल ज्वाइन करके जा रहे हैं अभी। ठीक है ऑन कर दो भाई 1 घंटा सपोर्ट कर दो प्रेमनाथ भैया। हम 6 बजे सुबह में आएंगे सपोर्ट करेंगे। भाग्यवती रहो। बड़े भैया इस समय हम आपके लाइव में नहीं आ पा रहे हैं। आप बोल रहे थे मेन आईडी से आओ। जब हम मेरी से मेन आईडी कहीं और लगा देते हैं ना भैया तो फिर उनके लाइव से अगर निकल के आपके लाइव में आऊंगी तो सब लोग सोचेंगे दो जगह हाँ सपोर्ट कर रही है इसीलिए नहीं आ पाती हूँ भैया। ठीक है। अरे दिनेश भाई आप भी ऐसे बोल रहे हो। आपके भैया जी सुन भी रहे हैं। ये मत सोचना। सब सुन रहे हैं सब कमेंट देख रहे हैं बस बोलते नहीं है भाई। पहला कमेंट देखो। अच्छा अच्छा 1 मिनट बड़े भैया देख रहे हैं। पहला कमेंट अपने बड़े भैया का देख लूं। कैसी हो प्रिया मिश्रा छोटी छोटी बहन जी खाना हो गया आपका मेरी छोटी बहन क्या हाल चाल है आप बताओ छोटी बहन। सब ठीक है भाई देख लिए कमेंट। हाँ भाई आप बड़े भैया आप तो कमेंट लिखते हो लेकिन हमें लगता है फुर्सत से लिखते हो। जो कैमरा बंद किए तो बोलो बगल कर। बोल रहे हैं जब तुम पढ़ रही हो तो हम काहे पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे भाई। ठीक है उनका सपोर्ट की। ठीक है पूरे गांव भर को सपोर्ट किए करो और हमारा क्या है हम तो नहीं बड़े भैया ऐसे काहे बोल रहे हो बड़े भैया। हाँ आएंगे अपने बड़े भैया के लाइव में आएंगे अपने बड़े भैया के लाइव में नहीं जाएंगे तो किसके लाइव में जाएंगे बड़े भैया बताओ।
आएंगे भैया। गलत थोड़ी कुछ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, आप काहे गलत बोलोगे सीताराम भैया। आप तो कुछ गलत आप और आपके भैया जी कुछ गलत बोलते ही नहीं हो। भैया जी जानते हैं छोटा भाई कमेंट कर रहा है। हाँ हाँ, भैया जी जानते हैं छोटा भाई कमेंट कर रहे हैं ना, लेकिन वो भी जानते हैं अब। आपके भाभी जी को भी जानते हैं भैया, इसीलिए बिना उनके आज इजाजत के चालू नहीं किए हैं भाई। जी जय हो, जय हो भाभी जी जेठानी की जय हो, भाभी के देवरानी की जय हो। अच्छा भाई, हमारे प्रेमनाथ भाई का भी जय हो भैया जी। ये छोटे भाई से रहना, कमेंट करते रहना अपने भाभी को। हाँ हाँ, आज पता नहीं कहाँ से पधार दिए हो दिनेश भाई, और इतना तो नहीं फुर्सत है आपके पास। इतना चिंता होता भाई तो आप आते हम अपने भाभी की सपोर्ट करने के लिए। सीताराम भैया, देखो हमारे भाई जैसे कितना सपोर्ट करते हैं, बिना चिंता के नहीं सपोर्ट करते हैं। आपको कोई फिक्र ही नहीं है। राधे राधे सभी को। ठीक है, किसी को क्या रोज रोज सपोर्ट कर। बड़े भैया जानते हो, 2 दिन हमारे मोबाइल का नेटवर्क नहीं सही था ना, जैसे पता नहीं नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था, तो हम नहीं सपोर्ट किए, तो सब लोग बोले हैं कि सपोर्ट नहीं की हो, हम भी नहीं करेंगे। मतलब सपोर्ट जैसे अगर वो करते हैं तो हमको भी करना पड़ता है भैया ना, इसीलिए। एक तो ड्यूटी का समान हो गया है भाई। सपोर्ट के बदले सीताराम हमारे भाई। सीताराम, ये भाई नाम समझ में नहीं आ रहा है किसका है, पता नहीं। अच्छा ठीक है, आज देखेंगे दिनेश भाई सुबह हो तो कितना हमको सपोर्ट करते हैं। आज ही देखेंगे भाई हम आप। ये सब ये सब नहीं बड़े भाई, जैसे कि जो जितना सपोर्ट करेंगे, जैसे जो चैनल चलाते हैं, जो लाइव चलाते हैं, उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा ना बड़े भैया। हाँ, ठीक है भैया दिनेश भाई।
लेकिन आएंगे आपके लाइफ में बड़े भैया, चिंता मत करना। हाँ, हम सोच रहे थे कि बिना बुलाए मायके नहीं जाना चाहिए बड़े भैया। जब तक हमारे बड़े भैया नहीं आएंगे हमको नहीं बुलाने, तब तक हम नहीं जाएंगे उनके लाइफ में। इसीलिए नहीं आ रहे थे बड़े भैया। अब रोज अपने मन से चले जाएंगे तो हमारे बड़े भैया सोचेंगे हम तो नहीं बुलाते हैं अपने बहन को, फिर भी हमारे। ठीक है, आपको जैसे सही लगे। जितने लोग का हम सपोर्ट करते हैं सब हमारी दीदी हैं, सब हमारी बहनें हैं। बड़े भैया हमारी दीदी है, हमारी जो बहनें हैं। ये क्या बात हुई भला। हाँ, इसीलिए हम सोचे हमारे बड़े भैया आएंगे अपने छोटी बहन को बुलाने, तभी तो हम जाएंगे। वैसे अपने मन से नहीं मायके में जाना चाहिए भाई।